ओके, तो इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कॉनकेव मिरर हम देख रहे थे। कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था, फोकस पे इमेज बना था। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा था, मतलब बिटवीन बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। उस केस में इमेज आपका फोकल पॉइंट, फोकस और सेंटर के बीच में बनता है। फिर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा था और इमेज भी सेंटर पे बना था। एंड वी आल्सो स्टडीड साइमल्टेनियसली इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, ये सब हमको आज वापस देखना है। बट टुडे we will be doing it in little more details. So let me just put here the name of the reflecting system that we have. Name of the reflecting system मतलब हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं। For example we are talking about mirror over here. तो कौन सा मिरर है वो पहले देख लेंगे। So let's say we will start with concave mirror first, और concave mirror के साथ साथ हम लोग convex भी देखेंगे आज। So first type of mirror that we are going to study is concave. Already we have studied it in last lecture, but आज हम लोग रिवीजन करके we will revise it and we will also go and visit convex mirror. तो convex mirror भी देखना है आज। So we are going to do it comparatively. Concave and other mirror था आपके पास convex। याद रखना, कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, ये याद रखना। राइट, देन व्हाट डू वी नीड, व्हाट मोर डू वी नीड। एक तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों को ऑब्जेक्ट का लोकेशन नहीं पता, इमेज का लोकेशन बोलना इज नॉट पॉसिबल। सो वी फर्स्ट नीड टू नो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू। वी ऑलरेडी नो दिस, हमको ऑलरेडी पता है दैट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू, small u. So location of object. Then location of image. Location of the object, location of the image. Okay, then magnification. Magnification मतलब आपको पता है size of image to that of size of object होता है ये। So let's write magnification in this column. Magnification. All right. Then फिर हमको ये भी देखना है कि what is nature of image. We want to see what is nature of image. And in nature of image, as I told you, इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, इमेज इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, ये दोनों देखना है हमको। सो लेट्स सी whether the images obtained will be real or virtual. और ये जो टेबल है, दिस विल फॉर्म द बेसिक्स ऑफ योर रे ऑप्टिक्स, ये आपको पता होना ही चाहिए। So let's see it whether it will be real or virtual and whether it will be erect or inverted. Right, and if you don't remember, अगर आपको याद नहीं है तो मैं वापस से एक बार
कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर देता हूं एंड कॉन्केव मिरर, आप इफ यू रिमेम्बर, कॉन्केव मिरर का आउटसाइड सरफेस पॉलिश किया था, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो इनसाइड से होगा. So assuming this is a concave mirror, assumption है, थोड़ा सा शेप प्रॉपर नहीं आ रहा है, बट दैट्स फाइन. द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड फिजिक्स एंड नॉट ड्राइंग लेसन्स. तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है. देन यू शुड ऑल्सो नो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर जो था उसको हम लोग बोलते थे पोल, और कॉन्केव मिरर बाहर से पॉलिश होता है, इट इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड. So it is polished, it is roughed from outside. Then यहाँ पे somewhere here you have focal point or focus F, and somewhere here you have center of curvature C. Correct? Or this is infinity over here. Similarly, convex mirror जो है, convex mirror is something like this. और यहाँ पे ये जो inner surface है that is polished, और रिफ्लेक्शन आउटसाइड से होगा. एंड this is principal axis. So this is principal axis, and what we know is this is pole of the mirror. Geometrical center मतलब pole of the mirror. यहाँ पे होगा आपका फोकस, और यहाँ पे somewhere होगा center of curvature. Right? Good. तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए. Then what we have discussed earlier is location of object. तो मैंने आपको बताया था लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं एट इंफिनिटी. सो वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू इंफिनिटी. इंफिनिटी आई कैनॉट type because doesn't have keyboard doesn't have that symbol, so I will put it with my hands. लिख देंगे हम लोग वो. Then हमने ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे, u इक्वल टू इंफिनिटी पे. और एक केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन they converge at focus of the mirror. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो रेज जो है, रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, दे आर पैरेलल रेज, वो रेज पैरेलल होते हैं और वो फोकस पे आके कॉन्वर्ज होते हैं. गुड. दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो. मतलब लोकेशन ऑफ इमेज हमको पता है. सो वी नो वेयर image is formed. Image is formed at focus. At focus, right? So that is V is equal to F. So V इक्वल टू F मिलता है हमको इस केस में, राइट? स्मॉल f लिखना, क्योंकि स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ होता है और कैपिटल F मतलब फोकस पॉइंट होता है. तो इमेज डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल टू फोकस, एंड पोल टू फोकस डिस्टेंस जो होता है दैट इज बेसिकली फोकल लेंथ. तो आपको ये भी पता होना चाहिए. एट इंफिनिटी anyways, right? So what you must know in addition is ये जो डिस्टेंस है, this distance from focus to pole is focal length. The distance from center of curvature to pole is radius of curvature. तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. So this particular distance is small f, this is r. All right, good. So in this case, as I told you,
आपको पता ही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, इमेज बनता है फोकस पे, और इमेज जो होता है वो एक पॉइंट इमेज होता है। मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन वन, मतलब m इज वेरी वेरी लेस देन वन, इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉइंट डिमिनिश्ड। तो जो इमेज है वो पॉइंट डिमिनिश्ड होता है, मतलब द इमेज इज फॉर्म्ड just in a single point. So m is very very less than 1 and it is point diminished. Good. Then image is real. क्यों image real है? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पे पोल के मतलब मिरर के, और इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इमेज फॉर्म इज रियल इमेज। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इस केस में हमने देखा था that in this case the image form is always inverted, तो image is inverted। तो ये तो हमारा लास्ट सेशन में हुआ ही था, राइट। दूसरा केस भी हमारा हुआ था, राइट। इफ यू रिमेंबर अगेन, पहले हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता देता हूँ, डजंट मैटर। what we were doing is object was at infinity, image was formed at focus। फिर जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाओगे, इमेज दूर होता जाएगा, फोकस से दूर मतलब मिरर से दूर होगा। So when you are bringing the object near to the mirror, the image is going away. Correct? Right. So second location for the object is beyond C, मतलब center of curvature के बाद, लेकिन infinity पे नहीं। So it is beyond C. So beyond C, and you know one more thing, आपने ये मैंने बताया है आपको, focal length is R by 2, मतलब R is 2f, ये आपको पता है। ओके, तो the second location where one can keep object is away from the center of curvature, that is away from center, that is nothing but u is greater than r, but r is 2f। तो कई बुक्स में ऐसा लिखा होगा, तो भी ठीक है, राइट। तो I can say, I can put it like this, that is 2f। okay, so away from center, that is u is greater than r, that is 2f, ऐसा लिख सकते हो आप। एंड एज आई टोल्ड यू, इस केस में इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन f एंड c। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड r, मतलब f एंड 2r। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन focal length and radius r, and r is nothing but we already know, that is 2f। so image is formed between f and 2f, right। magnification, of course इस केस में भी m was less than 1 but it was not point diminished। इस केस में भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या? इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, राइट। सो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, बट एज आई टोल्ड यू, इस केस में पॉइंट डिमिनिश नहीं है। इस केस में पॉइंट डिमिनिश नहीं है का मतलब इस केस में इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से छोटा होगा लेकिन एक पॉइंट में नहीं होगा। सो इन दिस केस m is definitely less than 1, but you can just say it is diminished because it's not point diminished। image object से छोटा जरूर है but it is not in a point। okay, it is not in a point, it is diminished but not in a point। right। और इस केस में भी the image formed is real, क्योंकि इस केस में भी आपका जो इमेज होता है वो ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसलिए रियल इमेज। एंड ऑल्सो इन दिस केस अगेन द इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनता है।
so image is inverted. Then अब कहाँ रख सकते हो आप? पहले इंफिनिटी पे रखा था, फिर आप इंफिनिटी से पास में लाए सेंटर के बियॉन्ड, अवे फ्रॉम सेंटर, फिर आप बाद में सेंटर पे रख सकते हो. सो यू कैन कीप at center, you can keep the object at center itself, that is u is equal to r or 2f or 2f, एक ही बात है. So you can keep it over here. All right, so you can keep the object right at the center of curvature. तो इस केस में, in this case the image is again formed at the center itself. तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन जाता है इस केस में. And in this case m is equal to 1, मतलब image size और object size they are same. So there is, you can just say same size. So image size and object size are same size. Okay. Again in this case the image so formed is real, क्योंकि इस केस में image वापस से object के side पे ही बना है. So image and object both are on the same side. So the image so formed is called as real. And again in this case the image is inverted. Okay, the image is inverted. Then देखो infinity, फिर beyond center, फिर center, फिर अभी center और focal point के बीच में. So now you can keep the object between C and F, मतलब between center and focus. So you can keep object over here. इस केस में इमेज कहाँ बनेगा? इस केस में इमेज बनेगा बियॉन्ड सी. तो इस केस में इट विल बी अवे फ्रॉम सी, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम center. Okay, that is, you already know, that is v is greater than r. Okay, so in this case v is greater than r. Right, good. इस केस में the object size is less than image size, मतलब image size is greater than object size, मतलब basically magnified है. So in this case the image is magnified. तो ये पहला केस है जहां पे image obtained is magnified, image size is greater than object size. Again इस केस में image formed is real because it is on the same side as that of object, तो real image होगा. Then the image is also inverted, यहाँ पे भी उल्टा ही image बनेगा. Okay, then अभी C और F के बीच में हो गया, फिर कहाँ रखेंगे? At F. So you can keep the object at focus. You can keep the object at focus. पहले image focus पे बन रहा था, अभी object focus पे रखा है, मतलब u is equal to focal length f. तो जब object infinity पे था तब image बना focus पे. Okay, right, good. And when object is at focus, image is formed at infinity. तो सिर्फ उल्टा हो रहा है ये, at infinity, मतलब v is equal to infinity, वो मैं लिख दूंगा बाद में. So at infinity, right. In this case m is very greater than 1.
मतलब हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है। हाईली मैग्नीफाइड इमेज मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट में है तो उसका इमेज जो है वो बहुत बड़ा बनेगा, तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। So image is highly magnified, right? But again in this case, object and image both are on the same side, hence the image so formed is real image. Okay. Again in this case, there is inversion, so image so obtained is inverted. Correct. Good. तो ऐसा है कॉनकेव मिरर के केस में। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अच्छे से देख लो, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर image mostly is real and inverted. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, इमेज फोकस पे बनेगा और पॉइंट डिमिनिश्ड होगा, मतलब इमेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। ओके, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी से बियॉन्ड रखा है, सी के बियॉन्ड रखना मतलब यू हैव केप्ट इट एट आफ्टर सी, अवे फ्रॉम सी, अवे फ्रॉम सेंटर, तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, मतलब बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर। ओके, तो इट इज डिमिनिश्ड, लेकिन पॉइंट डिमिनिश नहीं होगा, ये पॉइंट में नहीं बनेगा, इमेज थोड़ा बड़ा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप सेंटर पे रखते हो तो उस केस में इमेज भी सेंटर पे बनेगा, तो इन दिस केस v इज इक्वल टू u। इस केस में m इक्वल टू 1 आएगा। m इक्वल टू 1 का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। करेक्ट। देन यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको ला रहे हैं इंफिनिटी से इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, सेंटर, सी एंड एफ के बीच में, फिर एफ पे, सो ऑन सो फोर्थ। तो जब तक आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हो, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, सी एंड एफ, इन सारे केसेस में इमेज सो फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, मैं वापस बोल रहा हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब कॉनकेव मिरर के केस में except for one, all the cases images are formed, image so formed is real and inverted। सिर्फ एक ही केस ऐसा है, that case is जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दोगे, मतलब यहाँ पे रख दोगे। दिस इज द ओनली केस where the image so formed is on the other side and the image so formed is virtual, क्योंकि ये अदर साइड पे बना है मिरर के, और इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है। याद करो अब तक उल्टा ही हो रहा था, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसा रख रहे थे तो इमेज उल्टा बन रहा था। तो ऑब्जेक्ट को आप अगर फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रख रहे हो, उस केस में इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट इज द ओनली केस इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसी जगह है, दैट इज बिटवीन f and p, which means u is less than focal length। This is the only place where if an object is kept, the image so formed is magnified, virtual and erect। By the way, ये कहाँ बनेगा? v greater than u, it is formed on the other side but at a distance greater than image distance, object distance। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा, देखो द थिंग इज, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, हमने रखा था ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, इमेज बनेगा ऑन द अदर साइड, बट दिस डिस्टेंस of image will be greater than 2 centimeter, that is what it means। so it will be at a distance greater than object distance, and of course in this case also m is greater than 1, मतलब magnified image है, not highly magnified, it is just magnified। हाईली मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ इंफिनिटी पे बनता है, तो
मैग्नीफाइड इमेज है। ओके, इस केस में द इमेज सो फॉर्म्ड इज वर्चुअल, it is not real, and that is the only case for concave mirror where you have a virtual image and it is erect, it is not inverted, erect image banta hai, it is not inverted, right? So this is all about image formation of a concave mirror. By the way, we are studying this all under a topic called as position, size, and nature, size and nature of image formed by spherical mirror, right? And I'm going to combine everything in one table. मैं basically कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को एक ही टेबल में रखना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीजन कि आपको कंपेयर करने में आसानी होगी, राइट? गुड। देन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही लोकेशन है ऑब्जेक्ट की। कैसे दो? एक तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दो, बहुत दूर है वो, करेक्ट? इधर ऑब्जेक्ट कैन बी इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, और इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो बल्ज है, देखो हमने इनर सरफेस को पॉलिश किया, मतलब रिफ्लेक्शन तो आउटर सरफेस से ही होना है, करेक्ट? लेकिन इस केस में फोकस मिरर के अंदर की तरफ गया, सेंटर मिरर के अंदर की तरफ गया। हम लोग मिरर के अंदर जाके तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, कभी देखा है क्या? मिरर के अंदर घुस के हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, वो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल सिचुएशंस हियर। तो यहाँ पे दो ही लोकेशन है, there are only two positions where you can keep an object, right? So only two positions, one is this, that you can keep this object at infinity, so object kept at infinity। इस केस में इमेज बनता है फोकस पे। कैसे फोकस पे बता देता हूँ, बिकॉज वी हैव नॉट डिस्कस्ड कॉन्वेक्स मिरर एज ऑफ नाउ, सो वी शुड डिस्कस इट नाउ। तो क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, मैंने बताया है, द रेज ऑफ ऑब्जेक्ट kept at infinity, they are always parallel to each other, करेक्ट? तो ये मिरर पे आए और मिरर पे आने के बाद क्या होगा? मिरर पे आने के बाद ये होगा कि दे विल बी रिफ्लेक्टिंग अवे। तो ये आए मिरर से रिफ्लेक्ट होके चले गए, समथिंग लाइक दिस, ओके? सो द rays, they came and they got reflected. That's why we say that convex mirror is a diverging mirror। क्यों? रे ऐसा आया, रिफ्लेक्ट होके चले गया, डाइवर्ज हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। बट इट विल अपीयर, हमको ऐसा दिखेगा कि ये जो रेज है दे आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट विच इज इनसाइड मिरर। इट अपीयर्स, दैट इज अपरेंट। हमारे पास ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर है तो रेज पैरेलल होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर पे आए, वो रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो गए, हमको ऐसा दिखेगा। इट अपीयर्स टू अस दैट द इमेज, दैट द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट,
हमको ऐसा दिखता है कि रेज जो है वो एक सिंगल पॉइंट से आ रहे हैं और वो पॉइंट मिरर के अंदर है बेसिकली। गुड, राइट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डाइवर्जिंग मिरर। गुड, तो आपको ऑलरेडी पता लग गया, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी वेयर इज द इमेज फॉर्म एट फोकस, राइट। गुड, तो ये तो केस इजी है। Object at infinity, image is always at focus. Doesn't matter which kind of mirror we are talking about. If it is convex, if it is concave, it is always the same case. It is always the same case. So, if you have a convex mirror and if the object is kept at infinity, then image is always formed at focal point, right? And in this case, m is less than 1 क्यों अगेन वही बात, इमेज एक पॉइंट में बना, एक पॉइंट में बना मतलब पॉइंट डिमिनिश्ड, तो वेरी लेस देन 1, तो इमेज फॉर्म्ड इज पॉइंट डिमिनिश्ड, पॉइंट डिमिनिश्ड, right? Easy. So this particular case was easy. Then in this case you have image as virtual. क्यों virtual दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे था मिरर के और इमेज राइट हैंड साइड पे है, एंड इन दिस केस इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, राइट। तो ये फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ओके। otherwise you can keep the object anywhere between infinity and pole, क्योंकि और कोई तो लोकेशन है ही नहीं, so you can keep it anywhere between infinity and pole. These are the only two locations for a convex mirror where you can keep an object. If you are keeping it anywhere between infinity and pole, अगर आप सपोज यहाँ पे रख देते हो, आप ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखते हो between infinity and pole, the image is formed between pole and focus. The image is formed between pole and focus, and the image is diminished, not point diminished, just diminished, and the image is virtual and erect. So if you keep it anywhere between infinity and pole, then in that case image is formed between image so formed is between pole and focus. Good enough, right? Then of course it is diminished. इसका मतलब ये होता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कभी मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। काम आसान हो गया। दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज स्टडी दिस इन कंपैरिजन, राइट। इसका मतलब ये भी होता है कि रियल इमेज कभी बनेगा ही नहीं कॉन्वेक्स केस में, तो इज ऑलवेज वर्चुअल। इसका मतलब ये भी होता है दैट कभी इन्वर्टेड इमेज बनता ही नहीं है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर का केस बहुत आसान है, एक्सट्रीमली सिंपल केस। क्यों? डिमिनिश्ड ही होगा, या तो पॉइंट डिमिनिश्ड होगा या तो डिमिनिश्ड होगा, लेकिन m इज लेस देन 1 ऑलवेज। हमेशा वर्चुअल बनता है, हमेशा इरेक्ट बनता है इमेज। दो ही लोकेशंस है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। यू कैन ईदर कीप द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, दैट्स इट। अगर इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज पोल पे बनेगा, अगर आपने इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगा, दैट्स इट। कॉन्केव मिरर के केस में there is only one position of object, that is between focus and pole, for which image formed is virtual and erect.
In all other cases, the image formed is real and inverted for the case of concave mirror. Right? So that is why it becomes very important for you to do a comparative study. एक बार आपको ये समझ में आ गया, रे ऑप्टिक्स इज नथिंग. रे ऑप्टिक्स आपको इजीली मार्क्स मिलने वाले हैं only if you have understood this very clearly. There is only one location of the object in case of concave mirror when the image so formed is virtual and erect. There is no position of the object in case of convex mirror where you can keep an object and you get a real image. ऐसा नहीं होता है, real image बनता ही नहीं है convex के case में. So this is as simple as that. Right. Then to make your job even simpler, I am going to make another table because what I want is जब हम लोग numerical start करेंगे, I don't want you to get confused. Confusion का कोई छोटा सा भी margin नहीं रखना है हमने. It should be very clear. So what I want to do is to make another table where we will be mentioning sign conventions. Object कहाँ रखा है, साइन कन्वेंशन क्या होगा, इमेज बनेगा उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन m का साइन कन्वेंशन क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इमेज का हाइट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. We will be writing all this because that is again important. So it is very simple actually. So extremely simple case. एक टेबल लगना है हमको. Then इस एक टेबल में in this single table we are going to put everything that we need. And by the way, इस टेबल को हमने डिवाइड करना है दो सेक्शंस में because we will be discussing for both mirrors, convex and concave. कॉन्वेक्स का केस बहुत सिंपल है as I told you earlier, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है. बट प्रॉब्लम इज विथ कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में यू कैन हैव both type of images. Both type of images मतलब you can have virtual as well as real image, and in most of the cases the image formed for a concave mirror is actually real image. There's only one position of the object for which the image formed is virtual, right? Good. So simple thing. Here I will be mentioning concave. तो हम लोग यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? समझेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब. यहाँ पे हम लोगों को देखना है कॉन्वेक्स का केस. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, कॉनकेव मिरर के केस में यू कैन हैव रियल इमेजेस. एंड इफ यू हैव नोटिस्ड, रियल इमेज कब बना था? रियल इमेज तब बना था जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोकल लेंथ. अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं वापस ले जाऊंगा उस टेबल पे. राइट. तो इफ इट वाज नॉट क्लियर, इट वाज क्लियर, बट इफ इट वाज नॉट सीन प्रॉपरली, आप देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इमेज रियल, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर इमेज रियल, ऑब्जेक्ट सेंटर पे इमेज रियल, ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में इमेज रियल, ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज रियल, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में इमेज वर्चुअल. मतलब जब तक u डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग? पोल से. जब तक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्यों बोल रहा हूं और इक्वल टू? क्योंकि फोकस तक जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो, मतलब u इक्वल टू f या फिर u ग्रेटर देन
f. तो if u is greater than or equal to f, the image so formed is real image. तो इसलिए मैंने टेबल में यहाँ पे पेज नंबर 2 पे मैंने बोला है रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन u is either greater than or equal to f, or the image will be virtual if and only if u is less than f. तो सिर्फ यही एक केस है जब इमेज डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से कम है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से कम है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये था द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड द पोल. तो ओनली इन दैट केस द इमेज सो ऑब्टेन्ड was virtual image, right? Otherwise in all cases it was just real. Okay, simple. Good. तो अब as I told you, we are talking about sign convention. We are talking about sign convention here. So, and you should know, u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? अब हमारे पास मिरर कौन सा था? मिरर था हमारे पास कॉनकेव, बाहर से पॉलिश किया है. एंड एज आई टोल्ड यू, हम लोग मिरर के अंदर जाके तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, और हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, बिकॉज ये पहला ही साइन कन्वेंशन का रूल था दैट the object is always kept to the left of the pole, या फिर the rays traveling are always taken to travel from left to right. मतलब object distance is always negative, always negative. Okay, good. फिर इमेज चाहे वर्चुअल बने, इमेज चाहे रियल बने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको काम में आने वाला है. जैसे मैंने आपको बताया, रियल इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बनता है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट में है तो इमेज भी पोल के लेफ्ट में है. तो रियल इमेज के केस में इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, करेक्ट? इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा. बट वर्चुअल इमेज के केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज राइट साइड में है, वर्चुअल इमेज है. तो इस केस में इमेज डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेंगे बाय साइन कन्वेंशन, क्योंकि इमेज बनेगा over here on the other side of the mirror. Correct. Focal length f. As you know, concave case में focal length is also on the left hand side. So focal length is also negative, irrespective of where object is kept and where image is formed. Focal length is always negative, right? Then radius of curvature also is always negative, irrespective of where you are keeping object and where image is formed. Correct. Then what else do we know? Height of object. Height of object को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल O से. So capital O over here is nothing but, मैं यहाँ पे लिख ही दूंगा बाद में, अभी लिख देते हैं U is distance of object, V is distance of image, F is focal length, R is radius of curvature, O is height of object या फिर length of object भी बोल सकते हो. हाइट कब बोलते हो? जब आप प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर रखते हो, तब मतलब आप लैटरल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
capital I is height of image, M will be magnification. So these are some symbols that will be used. Correct. तो ऑब्जेक्ट साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है हम लोग ऑब्जेक्ट रखते वक्त प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है। रियल इमेज के केस में हमेशा इन्वर्टेड बनता है, हमेशा उल्टा बनता है इमेज, मतलब हमेशा ही आई विल बी नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन तो आपको पता ही है बाय डेफिनेशन, height of image upon height of object, negative upon positive is negative, right? So you should know this, that it is always negative. Simple, क्योंकि negative upon positive is negative. इस केस में भी height of object is positive, but if you remember, virtual images are always erect, principal axis के ऊपर बनते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, मतलब मैग्निफिकेशन इज आल्सो पॉजिटिव, राइट? तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये साइन कन्वेंशन यूज करना है हम लोगों ने। तो कॉनकेव के केस में देखना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस या फोकस से अवे रखा है, फिर वो फोकस और सेंटर के बीच में हो, सेंटर पे हो, सेंटर के बियॉन्ड हो या इंफिनिटी पे हो, रियल इमेज इज फॉर्म। अगर इमेज रियल है तो उस केस में आपको पता है वी भी नेगेटिव आ जाएगा, फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही है, रेडियस कर्वेचर तो नेगेटिव ही है, ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव, इमेज साइज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, सो ऑन सो फोर्थ। वर्चुअल के केस में भी हमने लिखा है यहाँ पे। कॉन्वेक्स का केस बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है कि कुछ बोलना ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि इमेज राइट हैंड साइड में बनेगा, पोल के तो पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि याद है आपको ये था समथिंग लाइक दिस, अंदर से रफ किया है इसको, तो फोकल पॉइंट भी राइट साइड में, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में, ऑब्जेक्ट तो वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था, इमेज भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है मतलब पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। So now if you know all this sign convention, I can guarantee you किसी भी टाइप के एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड हो, JEE, नीट, CET, whatever it is, रे ऑप्टिक्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाला है, जो नॉर्मली सबसे वीक पॉइंट होता है। क्यों? बिना सोचे समझे हम लोग बस रटते हैं, दैट इज व्हाट आई डोंट वांट फ्रॉम योर साइड। समझ लो, सिर्फ समझना, ये 2 टेबल काफी है रे ऑप्टिक्स के लिए। You need nothing if you're talking about mirrors, huh? Lens का हम देखेंगे, I'm talking about mirror here, right? So this was a table for image formation and sign conventions, right? So very simple and interesting thing, and you will appreciate ये टेबल कितना यूजफुल है, ये तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में समझ में आ जाएगा कि व्हाई आई टेक दिस काइंड ऑफ थिंग। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बट इट इज important for you, right? Good. Then it is time for us to revise quickly. तो आज हमने जस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी किया है ऑफ the nature of the image formed by concave and convex mirror and also sign conventions। सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी किया है हम लोगों ने, कॉन्केव अलग से लेना, कॉन्वेक्स अलग से लेना, इट इज गुड, बट इन फैक्ट द बेटर वे इज टू कंपेयर दीज टू, क्योंकि इट विल गिव यू एग्जैक्टली द आइडिया। तो जैसे कॉन्केव, कॉन्केव का एक ही केस है जहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है और इमेज वर्चुअल बना है, एक ही है, बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ।
That is the only case an image form is magnified and the image is virtual and the image is erect. In all other cases, image is real and inverted. Convex mirror के केस में no matter where you are keeping object and there are only two positions where you can keep object, या तो infinity पे या तो infinity और pole के बीच में, क्योंकि उसका बल्ज आउटसाइड होता है और आउटसाइड सरफेस बल्ज जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, अंदर से पॉलिश किया होता है। हम लोग मिरर के अंदर जाके तो ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते, तो दो ही जगह है, इन्फिनिटी पे रखो या इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखो। इन बोथ केसेस image is never magnified, it is diminished. In both cases image is only virtual and erect. यहाँ पे रियल इमेज बनता ही नहीं है, इन्वर्टेड इमेज बनता ही नहीं है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इतना पता रहा तो भी बहुत है। देन वी हैव presented all this data without mentioning ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, कहाँ रखा है, इमेज का डिस्टेंस कहाँ होगा, कहाँ फॉर्म हुआ है, जस्ट साइन कन्वेंशन। तो कॉनकेव में दो टाइप की इमेज बनते हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल कब बनता है, फोकल, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखो या फोकस से दूर रखो, मतलब u is greater than equal to f। वर्चुअल कब बनता है, when u is less than f, राइट। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रियल इमेज कॉनकेव के केस में, तो u नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव, r नेगेटिव, सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव है इसमें। द ओनली थिंग दैट इज पॉजिटिव इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर रखा होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है, और बाय साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। तो रियल इमेज फॉर कॉनकेव ओनली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव, ऐसा याद रखना। वर्चुअल इमेज में यू हैव टू बी केयरफुल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, क्योंकि इमेज वर्चुअल है ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, मतलब पोल के राइट हैंड साइड पे बन रहा है, और पोल को हमने ओरिजिन मान के रखा था, मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे, मतलब पॉजिटिव होगा, करेक्ट। फोकल लेंथ नेगेटिव है क्योंकि कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, एंड देन ऑब्जेक्ट साइज इज पॉजिटिव, इमेज इज इरेक्ट, दैट्स व्हाई इमेज साइज इज आल्सो पॉजिटिव आई, देन मैग्निफिकेशन इज आल्सो पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के केस में रियल इमेज तो बनता ही नहीं है, ओनली इमेज that is formed as virtual, and except for object distance everything is positive here, right? Good. So we'll continue here onwards in the next lecture.